I call him because he has beaten all records. Recommended for Air Force NDA 153 course, recommended for NDA 154 course for Army, and recommended for Navy 10 plus 2 entry from Kolkata. This is the rarest of the rare things which has happened, and I'm proud to welcome Shravan Daigude from Sainik School Satara. So I had forgotten the dates of recommendations, but for the sake of recording and for the information, NDA 153 to FSB 26 July 24, Mysore recommended AIR 63, medical issue, which nobody can predict, but he fought back, got himself absolutely fit. NDA 154 recommended on 23 December 22 SSB Bhopal, All India ranking 13, and thereafter Navy Tech on 5th April from SSB Kolkata. Right. So without further ado, without wasting time, I would just like to listen to him and what has been his motivation of the drive which has taken him through and through these SSB chances and got recommended and came so high in merit. Certainly his performance must have been par excellence. Must have been certainly par excellence, right? So we'll ask him what has led to that par excellence performance. Over to you, Shravan. And along with him, his friend has come who's sitting behind Jay Tanwar. He's an NDA cadet. Jay, इधर साइड पे बैठ जा आके. Your best friend is here. You're welcome to sit and listen. Over to you. Good evening, all of you. I am Shravan from Pune, Maharashtra. So, I would like to give all the credit of all the three recommendation to whole Emma's family. As I still remember, first time when I called MP sir, he said one sentence to me. जिस दिन सैनिक स्कूल सतारा वाले अमास में घुस गए ना, उसी दिन वो रिकमेंड हो गए. तो मैंने वो चीज़ दिमाग में रख दी थी. And last 24 June 2024, I came here in 73 batch, and first attempt I got screened out, and then I was here. So basically, you need to keep in mind the things which MP sir tells you. जो सर बता रहे हैं ना, बस वो सुन लो. जैसे when we were here, lot of stars came, we used to listen to them. जैसे मैं भी यहीं पे बैठा था, तो एक ड्रीम होता है कि हम यहाँ पे बैठे, यहाँ से उठ के यहाँ पे आएंगे, स्वीट्स देंगे जब रिकमेंड होने के बाद, तो वो करना है. तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क. तो सर जितना बता रहे हैं उतना फॉलो करना है. जैसे बहुत अभी फर्स्ट वीक ही चल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही होगी होमवर्क में. तो मैं भी जब आया था, हमको दिक्कत हो रही थी. तो होमवर्क यही चीज़ है, जो अगर तुम होमवर्क करोगे, सिंसियर होगे अपने एफर्ट से, तो पक्का तुम रिकमेंड हो ही जाओगे. नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिकमेंडेड. सो आफ्टर दैट द थिंग इज डेटा डायरी. सो मैं जब यहाँ पे आया था सेकेंड वीक में, मंडे पे तुम्हारे नोट्स चेक होंगे. सो आई वॉज ऑन मंडे, आफ्टर चेकिंग द नोट्स, सर केम इन क्लास एंड said who has got the excellent in the notes. So I raised the hand, sir said stand up, and everyone clapped for me. So that was the moment, like I felt like I am doing everything right. So notes इतने अच्छे बनाओ कि अगर तुम यहाँ पे आए हो, पैसे दे के आए, यहाँ पे आए हो, तो फुल यूटिलाइज करो. सर पूरा नॉलेज देंगे. सर का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी चीजें नोट डाउन करनी है, और सर जो बोल रहे हैं ना, बस उसको फॉलो करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी. So after that, after completing course here, I went for SSB within 1 week and got recommended from AFSB. But after that, I got medically out. But after that, MP sir and Jay and Kumud Didi, both the Amar Star siblings, you can see on the board. Yes, sir. So they both and MP sir were the ones who raised me. Like they backed me. MP sir ने बहुत motivate किया, Jay ने and Kumud Didi ने बहुत support किया. So I met them because of AMAS. सो और ये बॉन्ड अभी ऐसा है, हम एकेडमी में साथ रहेंगे, हम अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो अमास में जो रूममेट्स हैं तुम्हारे, ये ऊपर से हमारे साथ पढ़ने के लिए आता था. शिव शक्ति पीजी में जितने लोग तुम मिल रहे हो ना, मिलजुल के होमवर्क करना है. ये बहुत आगे हेल्प करेगा. जैसे यहाँ से जाने के बाद तुम अभी फर्स्ट वीक में हो, 3 वीक्स में इतना बॉन्ड बनेगा, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चलेंगे, बाद में भी चलते रहेंगे, तो वो एक दूसरे का तुम कॉन्टैक्ट रखोगे. तो ये रखना है, साथ में जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे. So after that, when I went for Bhopal SSB, again I need to work that much hard only. So for psych जितना संदीप सर बता रहे हैं उतना more than enough है. And for GTO को तो आप मतलब जो सर बोल रहे हैं ना उतना ही करना है. 11 MRs rules, 5 golden steps,
और अभी सर ने जीटीओ स्टार्ट कर दिया होगा, ग्रुप डिस्कशन जीपी, ये रट लो पूरा, व्हाट इज जीटीओ लुकिंग फॉर, उसके अलावा कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ नहीं करना है उसके अलावा। आज ही डांट खाई है। यस सर, सो डांट तुम्हें मिलेगी, लाइक आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट जीडी, आई स्पोक इन ऑनलाइन इंटरव्यू ऑल्सो, सो वी बोथ वर इन सेम ग्रुप ओनली, सो sir gave me very bad feedback in the first GD. After that, I never gave him chance to give me bad feedback. So if you are here, then don't give sir any, not even single chance, chance ही नहीं देना है। सर ने मुझे पूरे 21 डेज के वीक में बस एक ही बार बोला था, मतलब वो भी बोला नहीं था, जस्ट फीडबैक दिया था। तो सर को एक भी चांस मत दो डांटने के लिए। अगर तुम उतना भी कर पा रहे हो ना, मतलब तुम सही लाइन पे हो, अगर तुम सर की डांट नहीं खा रहे हो। और बाकी तो तुम हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अफसाना मैम जितना पढ़ाती है न्यूज़ में, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, बट व्हेन यू बी सिटिंग इन एसएसबी इन जीडी। डिफिकल्ट क्वेश्चन तेरे को आईओ ने पूछे थे। यस सर, ज्योग्राफी से। यस सर, यस सर, है ना, वो कहाँ से आएगा? yes sir, so like my all 3 interviews were very different. In first SSB in Mysore, it was around 1 hour 25 minutes interview, and in first 2 SSBs I was not asked about anything in knowledge part, but in third SSB in Kolkata, I was already knowing that he's going to join NDA and he's just here for experience. So continuous all 40 minutes he was asking me about only military knowledge, world geography, Indian geography and current affairs. So whole interview 40 minutes in third SSB was around, everything was about knowledge. So knowledge is most important, तो उसीलिए data diary है। So when I was here, my notes were best, my data diary was best. So if you are here, try to be best in everything. Like this week, the weekend you will have competitions, so try to perform at your best, give your 100% in every test, that is the only key to success. Yes sir, अच्छा, वहाँ पे हाउ डिड यू परफॉर्म इन, लेट्स से भोपाल एसएसबी? yes sir, तो कैसा रहा वहाँ पे? मतलब भोपाल एसएसबी तो उसके आप जा रहे हो अभी, yes है ना? sir, yes sir. तो वहाँ पे साइड टेस्ट कैसा था? Sir, like in Bhopal, after screening, the site test was very easy for me. Like Sandeep sir in feedback also said me that you just need to get screening, you will get through. So site test was very simple. 12 out 4 to 5 pictures came from Practice picture. yes sir. And after that was also easy. And one tip for everyone from my side for VAT. When Sandeep sir takes VAT, after the test, everyone starts saying their sentences, like sir is this right, tell our sentences, like Jay used to do that. But don't do that. Whatever sentences sir is telling you, just note down them, because मतलब अगर तुम बताने जा रहे हो ना, तो तुम जो सर बता रहे हो उस पर ध्यान नहीं दोगे। और संदीप सर विल टेल यू दैट राइट वेन एवर यू आर सिटिंग फ्री हियर, though you will not get time to sit free, but whenever you are sitting free, just write 3 sentences, write story, you can do anything. Revise the notes, revise what is GTO looking for, because next week is going to be very tough for you during PGT classes. So remember everything what is GTO looking for, और जितने रूल्स पढ़ाएंगे उतना उतना ये रिवाइज कर लो। वहाँ पे जीटू कैसा हुआ एसएसबी में जब गए भोपाल में? Yes sir, the GTO was like easy for me. GD like I said, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो डेटा डायरी न्यूज, यू विल सिंगल हैंडेडली हैंडल एवरीथिंग, बहुत आराम से करोगे। जितना डेटा, मतलब when you will give data na, everyone will be shocked and listen to you, that is the key. If you are speaking relevant, logical, practical, then everyone will listen to you. GP मुझे लगता है, मैंने when I messaged to sir, I said that GP is the strongest point of Amasians, and sir will tell you the story about GP. So make it as your strongest point. So मेरे GP में I gave in all 3 SSBs I gave the common solution, and डिस्कशन में बहुत तुम अच्छा करोगे GP में, अगर यहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो। आफ्टर दैट PGT ऑलवेज यू हैव टू बी फर्स्ट, मतलब ये सब सारी चीजें नेक्स्ट वीक में तुम्हें पढ़ाई जाएगी। आफ्टर दैट माई कमांड टास्क वॉज वेरी हार्ड, लाइक इन भोपाल, out of all the Bhopal is 4 boards, so in whole 4 boards it was the newest command task, new one built. So I was the first one to get You tested on experiment. it. Yes sir. So I was able to feel everything, all the 4 structures were moving. I was able to crack it. That was the GTO part. Other conference? My all 3 conferences were very short, very short. Like I was asked general questions only. And in interview, like if you are coming to AMAS, most of the students don't even know. Like in my SSB, one student was there from AMASian. He was not knowing full form of AMAS.
Like in Bhopal, out of my interview was around 10 to 12 minutes, and out of it 5 to 6 minutes were only discussion on AMAS, like what we do at AMAS, who is running it, and all the basics questions. So you have to prepare that also. बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है. अभी नहीं पता. Yes sir. So, Shravan, it was nice meeting you. I was wanting to physically meet him. It has been about a year he was here. Though virtually, when he got recommended, every time he used to speak, and it was interesting to listen to his tales and experiences, anecdotes of SSB. But I was so happy, and I kept telling him कब आ रहा है. तो जब एनडीए का पासिंग आउट हुआ, जय को छुट्टी मिला, तो ये दोनों साथ में आ गए. And I'm very happy. He talked about Jay and Kumud. Kumud is Jay's elder sister. She also recommended twice. Unfortunately, abhi merit out. I'm sure in the next attempt she'll surely get merited. We're hoping for that. So now, as per AMA's tradition, one tie per recommendation. So he takes 3 ties, right? So let me present the 3 ties. इसके बाद इस एनडीए के बच्चों को भी डाउन सेट ऑप्शन में पूछ सकते हैं. आज एनडीए वाले सबसे लास्ट में जाएंगे. यू कैन आस्क टॉक टू हिम. बाकी पहले से होता है.